written over here कि आप ये 10 लोग बहुत विजिलेंट रहेंगे सेशन 1 में, एटलीस्ट अपने पेन पेपर के साथ अवेलेबल होंगे और जब जरूरत हो कुछ चीजों को नोट डाउन करेंगे ताकि आप मुझे हेल्प कर पाए। Good जी सर। morning, sir. Sir, I will need just 5-7 minutes more to be ready. आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट मैम। We will start session at 10. So another 5 minutes is there. Yes, sure, sir. Yeah. Hello. हेलो। Yes, sir. आवाज कम आ रही है। आवाज के अभी है ही नहीं, म्यूट पे है अभी सर। अच्छा ठीक। सेशन 10 बजे स्टार्ट होगा। आपको हमारी बातें मिल रही हैं? आवाज सुनाई दे रही है? यस जी सर। सर, सुनाई दे आवाज रही है सुनाई सर, दे रही है। सुनाई दे रही है सर। शमसुन नेहर मैम, आप ऑनलाइन हैं?
राजेश सर, हम लोग सेशन शुरू करें? यस सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. Good morning. ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आप देखें 10 नाम चैट बॉक्स में हैं। दिखाई नहीं दे रहा सर कौन? आप चैट बॉक्स में देखें सर, आप देख पा रहे हैं? यस सर। आप चैट खोलेंगे तो आपको 10 नाम दिखेगा। जी सर। हर नाम वन आफ्टर अनदर लिखा है। ये 10 ग्रुप लीडर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर स्नेहा ग्रुप नंबर 1 में लीडर हैं, कार्तिक ग्रुप नंबर 5 में लीडर हैं, रश्मि मैम ग्रुप नंबर 7 में है, लाइक दैट। आप अपना ग्रुप नंबर याद रखें, मैं केवल ग्रुप नंबर बोलूंगा और उसके लीडर से हेल्प लूंगा, ठीक है? राइट? यस सर। एक चीज और मैं कल की फीडबैक पर सामने दूं, और कल की फीडबैक को देखकर मुझे ऐसा लगा कि चूंकि हम सब लोग टीचर हैं, प्रिंसिपल एचओडी इंचार्ज बाद में है, तो हमने जो फीडबैक लिखा है एज ए टीचर लिख दिया, जबकि हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि ये एमडीपी का ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन को कैसे कंट्रोल, मॉनिटर, इवेल्युएट एंड रेक्टिफाई करेंगे। इट इज नॉट फॉर योर डेवलपमेंट, इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल or an HOD or an in charge to manage and monitor things in front of you. तो थोड़ा आज के पूरी पढ़ाई को और पूरे फीडबैक को इसी ऑब्जेक्टिविटी से लेंगे, राइट? ग्रुप 1, the leader of the group 1, please unmute yourself and talk to me. Leader of the group 1, please unmute and talk to me. It is Dr. Sneha. Hello. Group number 2. मेरी आवाज आप तक मिल रही है? The leader of the group number 2. विपिन चंद्र जी, are you here? राघेंद्र जी, सर ग्रुप डिटेल चेक होगी क्या? एक बार फिर से ग्रुप लिखें। यस सर। These are the 10 peoples I had written again. These are the 10 peoples. I am supposed to take help from all these 10 people. तो इसमें से जो पहला नाम है वो ग्रुप 1 है, दूसरा नाम ग्रुप 2 है, तीसरा ग्रुप 3 है, लाइकवाइज जो लास्ट नाम है वो ग्रुप 10 है, लीडर ऑफ द ग्रुप 10. So the first group people, डॉक्टर स्नेहा, बिपिन चंद्र जी. यस सर. मैम, जो कल हम लोगों ने जितनी भी बातें की ना, बाकी सभी लोग अपने को म्यूट रखें. कल जो हम लोगों ने बातें की
इको हो रहा है कहीं से राजेश सर देखिए। हम लोगों ने जो कल बातें की हैं उस बात से ये मुझे एक रिफ्लेक्शन आया है कल के फीडबैक से कि द फीडबैक आई रिसीव्ड इज फ्रॉम फैकल्टीज नॉट फ्रॉम इंचार्ज। तो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लेसन प्लान, दैट मींस व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लेसन प्लान फॉर एज एन प्रिंसिपल, not as an individual teacher. So I got answers, benefit of lesson plan for a teacher, and I intended to discuss with you that how a principal is taking advantage with the help of lesson plan of his faculties. Dr. Sneha, मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. अब आज की सेशन को हम लोग थोड़ा आगे ले चलें। मैम, जो आज का पहला सेशन है दैट इज ट्रेनिंग नीड असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। मैडम, बीइंग अ प्रिंसिपल और बीइंग इन चार्ज, व्हाई डू असेस दिस ट्रेनिंग नीड? आप असेस ही क्यों करती हैं इस ट्रेनिंग नीड को? सर मेरी क्वालिटी की अश्योरेंस के लिए। मैम, मैं एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। आपको पता है कि देश में वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, राइट? बहुत तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ठीक है मैडम? जी सर। कैसे आपको पता चलेगा कि आपको अपने यहाँ के किन फैकल्टीज को ऐसे प्रोग्राम में नॉमिनेट करना चाहिए? अनलेस यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड ऑफ द टीचर, ठीक है मैडम? जी सर। अब एक छोटा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मैंने कल के लेसन में कहा कि जो आपके डिपार्टमेंट के 5 टीचर्स हैं, ये सभी लेसन प्लान बनाएंगे और ये एंट्रीज करेंगे, और ये एंट्रीज के लेसन प्लान की सारी चीजें आपके टेबल पर जब एज ए प्रिंसिपल आएंगी, देन यू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि आपके किस टीचर की इफेक्टिविटी क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, वो कौन टीचिंग मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके स्टूडेंट्स के असेसमेंट का तरीका क्या है, इन नंबर ऑफ चीजें हैं, राइट? राइट सर। और आपको ये पता चलता है कि ये टीचर्स ये काम नहीं कर रहे हैं, ये आपका प्रिंसिपल ये काम नहीं कर पा रहा है, ये आपका एचओडी ये काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या उस एचओडी को इसकी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? यस सर। जब आपको ये पता होगा उसकी ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, तभी उसको आप उसकी ट्रेनिंग पर भेजेंगे ना? यस। समटाइम्स आई एम वेरी गुड इन एकेडमिक्स, बट आई एम नॉट वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल, राइट? so I need to be sent for a training on communication skill. Yes. Or being a teacher, I am not utilizing various teaching methodology in the class. I do not have understanding which teaching methodology is important for which topic. I am not able to recognize this. तो प्रिंसिपल को ये पता होना चाहिए ना कि आपका कौन सा टीचर कहां पर सपोर्ट चाहिए उसे। यस। अब कई प्रिंसिपल ऐसे हैं जिनके यहां परमानेंट, टेम्पररी, गेस्ट फैकल्टीज के रूप में 200-200 टीचर्स हैं एंड 30-40 सब्जेक्ट्स उनके यहां पढ़ाई होती है। तो आप वैसे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जहां आपको यह पहचानना मुश्किल है कि कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट का है, तो आप उस टीचर की इफेक्टिविटी कैसे पहचानेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आई हैव बीन टू संजीवस कॉलेज मुंबई, ठीक है मैडम? जी सर। The building and interiors of Sanjeevas College Mumbai is classical.
and Yes. it requires to maintain and manage those things by the fourth grade employees. It is a real challenge. True, sir. In your institution, that these challenges are not there. Perfectly right, sir. So, being an in charge of the college, I must know what are the challenges over there and what is the training needed to my teaching or non-teaching employees. Yes. In Sanjay Vyas College, Mumbai, how many teaching faculties were there? कुछ guess कीजिए मैडम. Any guesses? कितने लोग होंगे? So maybe between 100 to 200. It is. I had been there, and the total participation of teaching staff was 235. Oh, wow. Big number, sir. And that too, the college was ongoing. That means few of the faculties were in the class. They did not get opportunity to come in my webinar. The numbers will be somewhere around 300 plus. Just think, being a principal of that college, what are the challenges in front of the principal? Even in your institution, the HOD is having 3, 4, 5, 6, 7 faculties. And the HOD is responsible for effectivity of the class. Yes, sir. So this is very important to understand what training is needed. Because in any college, their departments are allocated, and every department is an head department. Every function is given to the in charge. So various in charge and various HODs are there. And that these HODs and in charge are supposed to help the principal. Right. If they are not trained, they are not able to give you proper feedback. हमारे साथ मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. So what are the challenges? आपको क्या लगता है मैडम, क्या challenges हैं? शमसुम नेहर मैम, शमसुम नेहर मैम, आप वेबनेयर में हैं? मैडम आप हैं? So the understanding of training need for teaching and non-teaching employee is very important. It is undoubtedly accepted by everybody. Please write in the chat box yes. डॉक्टर स्नेहा, जब आप ट्रेनिंग नीड देखेंगी टीचिंग फैकल्टीज का, तो आपको देखना पड़ेगा उस टीचर की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। क्लास की डिलीवरी और क्या क्या चीजें हैं जो हमको देखना चाहिए। आप चैट बॉक्स में लिखें, सारे लोग चैट बॉक्स में लिखें और क्या क्या चीजें हैं जो एज ए प्रिंसिपल मुझको अपने टीचर में देखना चाहिए। प्लीज राइट वेरी फास्ट, वी नीड टू कवर वेरियस थिंग्स। प्लीज राइट, दिस इज पंक्चुअलिटी 1, what other attitude, what other discipline, interest, what other
progressive, personality, coordination, presentation skill, class management, honesty. What else? Please write fast. Presentation, mode of teaching, empathy, communication skill, teaching methods. What else? Time management. What else? Punctuality. What else? Good quality of the good presentation. What else? और क्या? Humor sense. What else? Interaction. डॉक्टर स्नेहा, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इनलिस्ट कर ली. पंक्चुएशन, गुड पर्सनालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारी चीजें इनलिस्ट कर ली, राइट? एज ए प्रिंसिपल आपको कैसे पता चलता है कि टीचर ये सब कर रहा है? Do you have any Excel in front of you which gives you an idea your teacher, your faculties are doing all those things? Or who is the faculty who is not doing this, who is not good in time management, who is not punctual, who is not asking good questions, whose skill, delivery skill is not good, who is not utilizing various teaching methods? आपको कैसे पता चलता है ये? सर लेसन प्लान. क्या अभी आपके पास कोई मेथड है पता करने का? सर जैसे आपने बताया था फर्स्ट डे पे, वैसे लेसन आज से प्लान पहले आपके पास कोई मेथड है ये पता करने का? नहीं. आप परसेप्शन पर चलती हैं मैम. आपने सप्ताह में एक दिन किसी का क्लास देखा, किसी टीचर से बात किया, एंड यू परसीव दैट द टीचर इज एग्जिबिटिंग एवरीथिंग, और यू परसीव दैट टीचर इज नॉट एग्जिबिटिंग. You are not sure yourself that what is to be done and what is the need of the hour. True, sir. I agree. So it is very important that we must understand the need of a teacher. To start with the induction training. मैडम, आपके यहाँ कोई टीचर ज्वाइन करता है, उसके साथ आप क्या करती हैं? उसका इंडक्शन कैसे होता है? सर हम एक ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन के थ्रू उसको इंस्टीट्यूट के बारे में बताते हैं, एंड देन उनको एक टॉपिक दिया जाता है और टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी, और उसके ऊपर से जो कुछ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बड़ी बड़ी चीजें हम लोगों को लगती है कि दिस हैज टू बी करेक्टेड, राइट? तो this is the one method. Absolutely correct, absolutely correct. मैं आपको स्लाइड्स पर थोड़ा फास्टर ले चल रहा हूं ताकि चीजें आप देख पाएं. So we need to understand the weaknesses of my teacher. We had listed a number of things on the chat box. आप सबों ने बहुत सारी चीजें इनलिस्ट कराई. उस इनलिस्टेड चीजें में क्या मेरे इस फैकल्टी को नहीं है उसके पास, ये पता करने का आपके पास एक और एक अकेला रास्ता है, वो लेसन प्लान. जितना एग्जॉस्टिव लेसन प्लान बनाएंगे हम, जितनी बातों को हम जानना चाहते हैं, वो सभी चीजें उसी लेसन प्लान में मैं इनकॉर्पोरेट करता जाऊंगा. और जैसे जैसे चीजें उसी लेसन प्लान में आप कॉलम्स बढ़ाते जाएंगे, the faculty will fill those columns to help you out to understand, to help you out your HODs to understand where is the gap and what is to be done. मैंने कल एग्जाम्पल सम दिया था लेसन प्लान पे कि you need to write some motivational aspects that I will motivate in this lesson plan by these 2, 3, 4 methods and these 2, 3, 4 processes. अगर आपको ऐसा दिखता है कि ये मोटिवेशनल के जो उसने स्कीम्स बनाए हैं, टॉपिक्स लिखे हैं, मेथड्स लिखा है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इसका मतलब है इस टीचर को बताना पड़ेगा कि क्लास को मोटिवेट करते कैसे हैं.
without hampering the ego of the faculty, without telling the faculty that you do not know how to motivate. You got to know as a principal that these 6 faculty, these 20 faculties are there with whom I should go with a training for how to motivate in the class. Because remember, सारे टीचर्स जब क्लास में इन करते हैं ना मैम, तो वो सभी पूरी 100% अपनी इफिशिएंसी देना चाहते हैं. कई बार उन्हें आता नहीं है कैसे दें, अदरवाइज इंटेंशन वाइज वो पढ़ाने ही जाते हैं. उन्हें पता नहीं है कैसे डिलीवरी करनी है, क्या करनी है, तो वो गलतियां कर रहे हैं. मेरी बात यहां तक क्लियर है? जी सर. यस सर. अब देखो, इसको हम लोग एक अलग, हम लोगों ने शब्द डाला है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्टाफ डेवलपमेंट. देश में यह नया शब्द कॉइन किया गया है, सो दैट कैपेसिटी बिल्डिंग में अगर मुझको भेजा जाता है तो मैं नाराज नहीं होता हूं ये बोलकर कि कैपेसिटी तो कभी भी किसी की भी कितनी भी बढ़ाई जा सकती है. तो आप मुझे ब्रैकेट में नहीं डाल रहे हैं कि तुम्हारी कैपेसिटी ठीक नहीं है इसलिए मैं तुझको ट्रेनिंग में भेज रहा हूं. आप मुझको कहती हैं जो भी कैपेसिटी आपका बहुत अच्छा है, गो फॉर अ ट्रेनिंग सो दैट यू कैन इनहांस योर कैपेबिलिटीज. अब मैं डॉक्टर स्नेहा, मैं एक सामने रख रहा हूं फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी. मैं आप सब लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं. आपके कॉलेजेस में जितने एचओडीज होंगे, जितने इंचार्ज हैं, हम एक दिन 1 घंटे का फ्री वेबिनार ऑर्गेनाइज करें. राजेश सर हैं टूल रूम में? यस सर. आप नोट कर लें, हम लोग एक फ्री वेबिनार ऑर्गेनाइज करें लेसन प्लान पर, हाउ टू प्रिपेयर अ लेसन प्लान, एंड दैट इज फ्री फॉर ऑल द फैकल्टीज, all the HODs and the in charge of all participating institutes in this MDP. इस MDP में जितने भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट किए हैं उनके लिए 1 घंटे का फ्री वेबिनार करेंगे जिसमें हम लेसन प्लान बताएंगे. राइट? अगर आपके फैकल्टी प्रॉपर लेसन प्लान बनाने लग गए, अगर आपका एचओडी उस लेसन प्लान को प्रॉपरली इवैल्यूएट करने लग गया, तो आपको ट्रेनिंग नीड्स पता चल जाएगा. व्हाट आर दिस ट्रेनिंग नीड्स? मेरी बात यहां तक ठीक है डॉक्टर साहब? अब फॉर एग्जाम्पल, यस सर. आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. Inquiry and problem based learning, right? So if a teacher is not teaching in his entire 40 lectures, is not using this technique, क्योंकि लेसन प्लान में आपके पास पता है कि 40 क्लास जो पढ़ा रहा है वो कौन कौन सा टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है. उसने इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल ही नहीं किया. या तो उसको इस टेक्निक पर कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो टेक्निक जानता ही नहीं है. आप जानते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड, सॉल्यूशन बेस्ड पढ़ाई का क्या एडवांटेज है. यू नो दैट, एंड योर टीचर इज नॉट यूजिंग इट. तो आइदर ही इज नॉट कन्विंस्ड और ही डू नॉट नो हाउ टू यूज इट, और ही इज इग्नोरेंट दैट इट शुड ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड इन टीचिंग. तो आपको यह पता चल जाता है कि आपकी टीचिंग नीड कहां है, ट्रेनिंग नीड्स कहां है. Am I clear with everybody? Yes or no? फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं एक
बायोलॉजी का टीचर है, जूलॉजी का टीचर है, उसने जीवन में एक्सेल शीट कभी नहीं देखा, और आप उसको कहते हैं लेसन प्लान बनाओ, एक्सेल शीट पर एंट्री करो, मर्ज करो, कॉलम बनाओ, देखो। द टीचर इज नॉट कंफर्टेबल वर्किंग इन एक्सेल. So the particular teacher needs some training on Excel. For example, PowerPoint presentation. अब देखो, अभी जो मैंने प्रेजेंटेशन में आपको दिखा रहा हूं, आप केवल इसके प्रेजेंटेशन को देखो. मैंने जानबूझकर ये प्रेजेंटेशन बनाया है ताकि आपको ये दिखा सके कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के मैंने पूरे स्लाइड्स के, ये पूरे एमडीपी के स्लाइड्स अलग अलग तरीके से बनाए हैं ताकि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बेनिफिट दिखा सके. अभी जो मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूं मैडम ना, आपको ज्यादा इसका प्रेजेंटेशन स्टाइल दिख रहा है, लैंग्वेज कंटेंट कम दिखाई दे रहा है आपको. You are more interested in design, less interested in words. So I made this presentation deliberately to drag your attention on the design, not on the words. अब एक दूसरा सामने देखो, फाइल मैनेजमेंट एक सामने एग्जाम्पल के रूप में फाइल मैनेजमेंट है. ठीक है, आप अपने क्लास में जब बच्चों को पढ़ा रही हैं तो किस बच्चे से आपने क्या सवाल पूछा, उसने कैसे जवाब दिया, आपकी कहां एंट्री है. आप तो परसेप्शन पर बता रही हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा बहुत खराब है. We being a teacher, we should not run ourselves with a perception, we should run with facts. अब नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज हैं, ऑल हेड टीचर्स, प्रिंसिपल्स, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सुपरवाइजर्स, काउंसलर्स, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, game teacher, all are non-teaching staffs, along with your librarians, personal staffs, peons, and everybody is a non-teaching staff, जिसके ऊपर में हमारा कोई खास ध्यान नहीं होता. मैडम, आपके अकाउंटेंट को आपने ट्रेनिंग कब दी? आपके एडमिशन इंचार्ज की ट्रेनिंग कब हुई? We all are concentrated, we are focused to rectify, polish our teachers. What about these non-teaching staffs? Because they are directly associated with the branding and students. And if these non-teaching staffs works properly, the role of principal become little easier. You do not have any administrative problem. For the benefit of my सारे principals जो अभी मौजूद हैं इस वेबिनार में, आपका अकाउंटेंट वीकली अकाउंट स्टेटमेंट आपसे साइन कराता है क्या? श्रेया मैम, आपका अकाउंटेंट आपको कोई वीकली रिपोर्टिंग करता है? हाँ सर. आपका एडमिशन इंचार्ज आपको वीकली कोई रिपोर्ट करता है? क्या लिखता है वीकली रिपोर्ट? क्या लिखता है मैडम? सर एडमिशन के मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इंक्वायरीज, वो एवरीडे का क्या इंक्वायरी आई, उस इंक्वायरी में क्या पूछा गया, कौन सी इंक्वायरी कन्वर्ट हुई, कौन सी इंक्वायरी नहीं कन्वर्ट हुई, क्या सवाल थे, उसकी क्या ऑब्जर्वेशंस थे, वो कुछ रिपोर्ट आपको देता है जिससे आपको ये पता चले कि पूरे वीक में एडमिशन में हो क्या रहा है और एज ए प्रिंसिपल मुझको कहाँ करेक्ट करना है. नहीं सर, इतने डिटेल में नहीं होता है.
मैम उसको एक रिपोर्ट आपको देना चाहिए, देखते ही आपको मालूम होना चाहिए उसे एक पन्ने की रिपोर्ट में कि what I am supposed to help him, how I am supposed to help him to rectify these problems so that admission process can be little smoother for next week. Sure, sir. मैडम उसके प्रॉब्लम को तो आप ही सॉल्व करेंगी ना? Yes. तो आपको तो नंबर्स पता है, नंबर्स क्यों नहीं है ये कहां पता चल रहा है? मेरी बातें आप लोगों को क्लियर हैं? यस और नो? Yes, sir. और डॉक्टर स्नेहा, मुझे उम्मीद है आपने कुछ नोट डाउन किया होगा, राइट? आप इस पूरे प्रेजेंटेशन को सम अप करेंगी 2-4 लाइन में? Sure, sir. प्लीज. बताएं मैम. जी 3-4 मोटी चीजें एज ए प्रिंसिपल आपको करनी चाहिए. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बताया था कि मतलब टीचर्स की इफेक्टिविटी पहचानने के लिए हमारे पास कौन से मेथडोलॉजीज हैं. तो ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज के बारे में हमने बात की. व्हाट कैन बी द चैलेंजेस ऑफ द टीचर्स. सो वी हैव लिस्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ टीचर्स, जैसे कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस है, पंक्चुअलिटी है, मोटिवेशन स्किल्स है. तो ये सारे हमने लिस्ट डाउन किए अभी. टू अंडरस्टैंड एज अ प्रिंसिपल, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय टीचर्स वीकनेस, देन हाउ टू हेल्प माय टीचर. सो लेसन प्लान पर हम जब भी अपने टीचर को बताएंगे कि आप ये सारी लेसन प्लान बनाओ, and then we as a principal we can rectify it and see what skills he is using and what skills he is unable to use. So हम लोग उसको rectify कर सकते हैं. So this is the way we can utilize the lesson plan at most to improve our teachers proficiency. फिर नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में अभी हमने बात की कि even the training for non-teaching staff is important to understand their needs, where they are lacking. So if we teach our non-teaching staff properly, then administration problems can be lessened. So इसके लिए हम जैसे ट्रेनर्स के लिए और टीचर्स के लिए लेसन प्लान बनाते हैं, वैसे ही हम नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी एक्सेल शीट या रिपोर्ट बना सकते हैं, जहां पर ये सारी चीजें जो है वो लिस्ट डाउन हो सकती है. एंड देन वी कैन सिट विद देम एंड फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड करेक्ट इट एट दैट पॉइंट. थैंक यू डॉक्टर स्नेहा, आपने बहुत अच्छे से चीजों को कंपाइल किया. राजेश कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? गवर्नमेंट ITI सोनीपत से कुछ सर हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं. आप लोगों ने हैंड रेस किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करें और बात करें. राजेश कुमार जी, गवर्नमेंट ITI सोनीपत, जॉन सोनीपत, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपने हैंड रेस किया है. No, thank you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Sneha. In group 2, में अपने साथ 2 लोग हैं, विपिन चंद्र जी और राघवेंद्र जी. आप दोनों अपने को अनम्यूट करें. विपिन चंद्र जी, राघवेंद्र जी. सर, गुड मॉर्निंग. विपिन चंद्र जी, राघवेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सर. Sir, I am requesting you, please help me in the entire this session
like Dr. Sneha has helped me in the session 1, right? Yes, sir. Please remain unmuted till end of this session, right, sir? Okay, sir. Okay, sir. आप कहाँ से हैं राघवेंद्र जी? I am from Bangalore. 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 Okay. You are working as? I am working as junior training officer, sir. Junior training officer. Right. So yes, you sir. have the certain responsibilities over there. So please remain unmuted so okay, that sir. we can talk with you. Okay, sir. Right. So another thing is monitoring teachers' achievement and management of a teacher. Right. Yes, sir. The first problem of a teacher is I'm a good teacher, so I'm overburdened. Number of classes, various responsibilities are on with me. And teacher X is not so good teacher as per the principal. So the X teacher is not given responsibilities, not as a number of classes, but also in the administration help and other things. This is the first parity. कि टीचर्स ये कहते हैं कि मैं अच्छा हूं इसलिए मुझको वर्कलोड है, ये अच्छा नहीं इसको वर्कलोड नहीं देता टीचर, राइट? दूसरा समस्या है कि मुझको जो वर्कलोड मेरे मैनेजमेंट ने, मेरे प्रिंसिपल ने दिया है, मेरा स्ट्रेंथ ही वो नहीं है. मेरा जो स्ट्रेंथ है मुझको उस स्ट्रेंथ के बेसिस पर वर्कलोड नहीं मिला. तो पहला है वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ है. दूसरा है वर्कलोड एज पर स्ट्रेंथ नहीं मिला है. राइट? yes. मैं मोदी गवर्नमेंट में देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में, कि जिन्होंने हेल्थ में डॉक्टरी कर रखा है उनको इस्पात मंत्रालय दे दिया. अब वो स्टील क्या जानता है? वो तो डॉक्टर है, एमबीबीएस है. वो जब तक समझेगा स्टील क्या होता तब तक तो 2-4 साल गुजर जाएंगे. मुझको स्टील मिनिस्टर बना दिया और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरे स्टेट में कोई स्टील प्लांट ही नहीं है. तो मुझे तो पूरे पॉलिटिकल करियर में स्टील प्लांट देखा ही नहीं था मैंने कभी. मैं आर्ट्स का ग्रेजुएट हूं और मुझको स्पेस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना दिया. तो जब वो बोलते हैं कि चांद पर ये उपग्रह भेजना है, तो मैं पूछता हूं ये होता क्या है भाई? अब हिस्ट्री से स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेट करने में मुझे क्या हो रहा होगा एज ए मिनिस्टर मैं ही समझता हूं. लाइकवाइज जो जॉब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये एक बड़ा समस्या है. हम लोग इसको आगे देखते हैं. बिकॉज बीइंग अ प्रिंसिपल you had only teachers with you and non-teaching staff with you to manage everything. Right? ठीक है राघवेंद्र सर? Yes, sir. तो So, आपको according to you, sir, I think in summary, the duty of principal is to here to see the excellency of each of the staff in the field, in what field they are excellent, and according to excellence itself, they have to give additional responsibility. So, very well said, sir. Okay, sir. Very well said. मुझे एज ए प्रिंसिपल, मेरे पास 300 लोग हैं एज ए टीचर मेरे इंस्टीट्यूट में. तो मुझे पता होना चाहिए ना किसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, किसका स्टेज मैनेजमेंट अच्छा है, तभी मैं किसी सेमिनार में उसको खड़ा करूं उस डैश पर. कोई एक ऐसा भी टीचर है जो डैश पर बहुत अच्छा बोल सकता है, इज वेरी गुड ओरेटर, और मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता हूं डैश पर जाने की, और जिसको भेजता हूं वहां पहुंच कर फंबल कर रहा, घबरा रहा है, उसके पैर कांप रहे हैं. What I am doing? Yes, sir. Being a principal, I failed to recognize the quality of my teachers. So I had not assigned right quality of job to right quality of man.
तो मेरा प्रश्न है आप सबों से, अगर आप प्रिंसिपल या आप एचओडी हैं, तो क्या आपको पता है कि आपके फैकल्टीज या नॉन टीचिंग स्टाफ्स के स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं? Not only on the academics but also in other things. राघवेंद्र सर, मैं एक सवाल उठा रहा हूं, मेरे इंस्टीट्यूट में आज एक कविता पाठ होगी, एक कवि सम्मेलन है, राइट? मैं किसी नेशनल पोएट को फैसिलिटेट कर रहा हूं, तो मेरे स्टेज पर ऐसा टीचर चाहिए जो खुद भी 2 लाइन कविता बोल सके। Yes, sir. अब मुझे पता ही नहीं है कि मेरा कौन सा टीचर कविता बोल सकता है, किसको शायरी आती है, तो आपने मुझे भेज दिया। Yes, sir. कि आप जाइए सर, मैं चला गया, मुझे कोई शायरी नहीं आती, और आपको भेजता, आप 4 कविता बोलते, 2 शायरी बोलते, पूरा एटमॉस्फेयर बदल देते हैं। मेरी बात क्लियर है सर? Yes, sir. So being a teacher, being a principal, being in charge, I must know the ability and capability of my teaching and non-teaching employees. अब सर मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, आपके ऑफिस के, आपके इंस्टीट्यूट के एरिया में गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि वैक्सीनेशन कैसे होगा, आपका कॉलेज कैसे क्या मदद करेगा, तो मुझे किसको भेजना चाहिए? मुझे एक ऐसे आदमी को भेजना चाहिए जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को यूज करने के लिए प्लान दे सके कि कैसे मेरे कॉलेज के बच्चे अवेयरनेस कैंपेन में जा पाएंगे। मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा? अब आपने मुझे भेज दिया, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे कॉलेज के बगल में कैसे पॉपुलेशन रहती है, कौन कौन से एरियाज हैं, उनका नाम क्या है। तो मैं उस गवर्नमेंट के मीटिंग में क्या कर रहा होऊंगा? आपके कॉलेज की बेइज्जती, कैसा टीचर इसको कुछ पता नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं? आपके ब्रांडिंग को ठीक कर रहा हूं, खराब कर रहा हूं? खराब कर रहे हैं सर। और क्या हुआ? नहीं, ये क्यों हुआ? उसको actually what happens means he is not having knowledge in that field, because of that he can't represent, although he may know something, he may not be able to present whenever required things are asked from the personalities from government side, like in the any meeting, right? No, sir. That means you are very well said. That means it is a wrong selection of person deputed in this meeting, and with that the entire branding of the institution is on question mark. Think, it is a government program. That means various different people from different institutions are there, right? Yes, sir. That means if I am doing good in that meeting, the brand level, the acceptance of my institute will go high. If I am not performing well, that means the brand level of my institute will go down. Am I clear, sir? Yes, sir. So, what is the role of principal over there? Principal has to at first see the what according to you what you said, no, that is the abilities of the each of the staff in the fields, and then he have to select the person who can reach to a certain height, go for this branding of the institute in that meeting. Depending upon their there's a knowledge and all, and also excellency, they have to pick that person and they have to select that person and they have to send it to a meeting. Or one more example you have given, that is some knowledge about Shire and all you told, no, sir.
So in that field, who can actually manage those all things? Principal has to select the such persons, and then they have to send for it, or they have to ask them for participation. So with effectiveness, So, right, sir? yeah, right. Very truly said, sir. Okay, sir. Very truly said. So, what I am supposed to do? Yeah. So, this is very important when you are selecting things, right? I'm just moving ahead. Now, I need to monitor teachers on various parameters. I discussed with you non-academic activity. Let's come on the academic activity. Being a teacher, you can teach 3 different subjects, not only one, right? You may have the ability to teach 3 different subjects, right? And now it is the responsibility of your HOD or the principal to assign you a paper. What he can perform best. It is not only, सर ये केवल आप क्या अच्छा पढ़ाते हैं ये जरूरी नहीं है. Yeah. उस क्लास में, उस कॉलेज में उन 3 टीचर्स सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए ये 5 टीचर हैं. ओके. आप सब्जेक्ट ए बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, मैं भी सब्जेक्ट ए बहुत अच्छा पढ़ा सकता, लेकिन आप सब्जेक्ट बी भी पढ़ा सकते हैं और मैं सब्जेक्ट बी नहीं पढ़ा सकता हूं. ओके. तो मेरे पास तो एबिलिटी केवल सब्जेक्ट ए की है, आपकी एबिलिटी सब्जेक्ट ए बी सी तीनों है. तो अगर आप सब्जेक्ट ए पढ़ाएंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं तो बेकार हो जाऊंगा. ओके. राइट सर. तो मुझे सब्जेक्ट ए पढ़ाना पड़ेगा और आपको सब्जेक्ट ए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उसके बाद भी आपको सब्जेक्ट बी मिलना पड़ेगा. राइट सर. और प्रिंसिपल को कन्विंस करना पड़ेगा कि दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग इट दिस टू यू, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प मी आउट इन दिस प्रॉब्लम. ओके सर. राइट. And it is not that if a teacher can teach a subject very well, he can also teach subject B very well given if he is given an opportunity and chances, and if the teacher is convinced. ठीक है सर? यस सर. अब एक दूसरी चीज देखो, हर एक टीचर की कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ डिमेरिट्स होती है, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं. आपके कुछ स्ट्रेंथ हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ थ्रेट हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, सबकी होती है. अब मेरे पास 2 ऑप्शन है सर. आपके स्ट्रेंथ को और मजबूत करते जाएं और आपके वीकनेसेस को भूल जाएं. दूसरा है आपके वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते जाएं. There is 2 methods. If I am good in calculus, let me excel in calculus. I may not have the understanding of algebra, so I will never go in the algebra. I will excel in calculus. सॉरी. ठीक है. ये दूसरा तरीका है, मुझे ठीक है कैलकुलस बहुत अच्छा आता है, अलजेब्रा कम आता है, मैं अलजेब्रा सीखूंगा और उसको भी ठीक करूंगा. So now the principal and HOD has to decide based on these SWOT analysis what step he wanted to take. वो आपको ऑलराउंडर बनाना चाहता है, वो आपको किसी एक फील्ड में एक्सेल कराना चाहता है. एक्चुअली ऑलराउंड बनाना इंपॉर्टेंट है सर. ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ओवरऑल सिचुएशन पर, सर्कमस्टांसेस पर. यस सर. अगर आप ऑलराउंडर हैं और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, वहां एक फैकल्टी छोड़ के चला भी जाएगा, यू कैन मैनेज दिस, राइट?
Yes, sir. लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस में काम करते हैं, एक्सलेंट इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो आपसे स्टूडेंट, आपसे इंस्टीट्यूशन एक्सेलेंस की उम्मीद करती है, एवरेज डिलीवरी की उम्मीद नहीं करती है। तो अगर आपको हम सब जगह इन्वॉल्व करेंगे तो आप एवरेज हो जाएंगे। सो आई नीड टू लीव इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर एक्सेलेंस इन योर फील्ड। मेरी बात क्लियर है सर? Yes, sir. तो ये तो आपके डायरेक्टर को, आपके प्रिंसिपल को, आपके एचओडी को समझना है कि राघवेंद्र जी को कैसे इस्तेमाल करेंगे आप, एंड दैट इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर योरसेल्फ और फॉर द इंस्टीट्यूट। एक और चीज सामने रखता हूं सर। Yes, sir. बीइंग एन टीचर, आपने स्वॉट एनालिसिस कर लिया कि मेरे ये 5 टीचर हैं जिनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बट एज अ पर्सनालिटी वाइज they do not have a good personality. He is very good teacher, but the personality wise they are very not good person, having good personality. अब वो सेव करके नहीं आते हैं, तो क्या जो प्रिंसिपल हम उसको बोल सकते हैं भाई तुम सेव नहीं करते हो, ठीक नहीं है, तो बुरा मान जाएगा सर। Yes, sir. ठीक है, उसके ड्रेसिंग, वो जो कपड़े पहनता है वो एक ही शर्ट को रोज पहने रहता है, उसको आप बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा। The teacher has no idea that these are a problem with him. अब एक फीमेल टीचर है आपके पास, वो जो ड्रेस पहनती है आपको ऑब्जेक्शनेबल दिखता है, बट यू कैन से दैट if you pinpoint it, it will treat it something else. So you have the opportunity to send these teachers in the personality development program, Yes, sir. where a trainer can inform him your dressing sense is not good, your attire is not good. Sure. So then the teacher will get corrected himself. So the understanding, monitoring of teacher is very important by the in charge. Yes, sir. Let a teacher is not using humor in the class. A very serious nature teacher Yes, sir. not using humor in the class, not using an opportunity to reduce the stress in the class. And the lesson plan you find, आपने उसको कहा था कि स्ट्रेस बस्टर के लिए, लाफ्टर के लिए, ह्यूमर के लिए आप क्या कौन कौन से स्टेप्स लिखते हैं, आपने लेसन प्लान में लिया। बीइंग अ प्रिंसिपल, इस महीने के टारगेट में आपने लिया कि इस महीने हम सारे टीचर्स का ह्यूमर एंगल ठीक करेंगे। Okay. तो आपने ये कहा कि इस महीने जितने भी लेसन प्लान हैं उसमें केवल आप एक चीज ऐड कर लो कि कहां स्ट्रेस रिलीजिंग या ह्यूमर या लाफ्टर क्लास में आप कौन कौन से सिचुएशन में 2 बार लाएंगे। तो सारे लोग अपने लेसन प्लान में 2 सर्कमस्टांसेस निकालेंगे कि यहां पर हम स्ट्रेस रिलीज करेंगे, और जो नहीं कर पाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये 7 लोग हैं नहीं कर पा रहे हैं, या उस महीने में सारे टीचर्स के लिए 1 घंटे का एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें ये पढ़ाएंगे उसको कि लाफ्टर को क्यों यूज करना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंस है इसका, कैसे करते हैं। So you had understood that this is the problem and that can be rectified only and only after monitoring your teachers' achievements. Yes, sir. Am I clear with you, sir? Yes, sir. अब टीचर को इवेल्युएट कर रहे हैं, हमने पीछे के सेशन में कई पॉइंट्स लिखा, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, डिलीवरी, एन नंबर ऑफ थिंग्स हम लोगों ने लिखा, राइट? मैं एक रास्ता देता हूं सर फॉर एवरीबडी, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। आप एक एक्सेल शीट बनाएं, 10 पॉइंट्स लिखें
communication, time management, delivery in the classroom, interaction with the student, ऐसे 10 पॉइंटर बना दे। एक्सेल पर बना दिया और सभी टीचर को ये एक्सेल सीट दे दिया और कहा कि सर आप जब अपना क्लास लेकर बाहर निकलेंगे एवरी डे, आफ्टर एवरी क्लास you give marks to yourself between 1 to 10, 10 the best, 1 the worst. Give marks to yourself. ठीक है? अब वो टीचर वो पूरी एक्सेल सीट पर पूरा महीना अपनी मार्किंग करेगा। Excuse me, sir. या प्लीज मैम, Please repeat. मैं फिर से बोल रहा हूं। हाँ जी। बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग एन एचओडी, मैंने एक एक्सेल सीट डेवलप किया जिस पर टीचर की 10 क्वालिटी जो हम लोगों ने डिस्कस की ना, टाइम मैनेजमेंट, डिलीवरी, इंटरैक्शन विद द स्टूडेंट, यूज ऑफ ह्यूमर, ऐसे 10 चीजें हम लोगों ने लिख दी और टीचर को कहा हर रोज हर क्लास के बाद अपने आप को उस एक्सेल सीट पर नंबर दो between 1 to 10, 10 the best, 1 the worst. तो अपने को नंबर देगा 3, 5, 7, जो भी नंबर देना चाहेगा वो देगा, राइट? थैंक यू उसको सर। ये कहना है कि ये सीट मुझे आपको कभी नहीं देना है, इट इज फॉर यू ओनली, यू नीड नॉट टू गिव दिस सीट टू मी, इट इज फॉर द टीचर्स ओनली। ओके सर। वो हर क्लास में वो नंबर देगा अपने को और एंड ऑफ द मंथ में उसको दिखेगा कि आई एम वेरी गुड इन डिलीवरी बट आई एम वेरी बैड इन इंटरैक्शन विद द स्टूडेंट। उसको खुद रियलाइज होगा और आप एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, एज ए इंचार्ज उससे केवल ये पूछेंगे कि आपका स्ट्रेंथ एरिया कौन था, इसमें 3 सबसे अच्छा पॉइंट्स किस पर मिला आपको, तो आपको 3 एरिया बताएगा। टाइम मैनेजमेंट में मिला सर, इंटरैक्शन में मिला सर, ह्यूमर में मिला, इसका मतलब बाकी 7 में नहीं मिला उसको। दैट मीन्स फॉर रेस्ट ऑफ 7 पॉइंट्स ही नीड सम ट्रेनिंग। मेरी बात क्लियर है सर? ओके सर। आप हर महीने में ये क्वेश्चनर बदल देंगे ना उसके लिए, तो एट द एंड ऑफ 6 मंथ आपको पूरी तरह पता चल जाएगा कि इसको क्या आता और क्या नहीं आता, वो खुद बता देगा आपको। और जो नहीं आता उसको करेक्ट करना है। तो फर्स्ट थिंग इज हर महीने का एक टास्क होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ विल इंप्रूव इन दिस थिंग इन दिस मंथ। और महीने में जब आपने पॉइंट लिया उस पर एक ट्रेनिंग करा दिया पहले ही, और पूरा महीना उसी पर सब लोग काम करेंगे और एक टीचर का ये पॉइंटर बनाएंगे जो टीचर्स आपको इन्फॉर्म करेगा कि हम कहां खड़े हैं। ये मॉनिटरिंग हो जाएगी आपकी। सो बेसिकली द मॉनिटरिंग शुड बी ऑन द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, रिलेवेंस, इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। फॉर ए प्रिंसिपल you need these things in the class. आपको चाहिए टीचर एफिशिएंट, टीचर की इफेक्टिविटी, वो जो एग्जाम्पल देता है, वो जो पढ़ाता है उसका रिलेवेंस, उसके इम्पैक्ट, स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और जो पढ़ाता है वो बच्चों के दिमाग में, दिल में रहता है क्या, सस्टेनेबल है क्या वो। एग्जाम नहीं पास करना सर हमको, हमको तो मेरी पर्सनालिटी में वो चीज इनपुट होनी है। मेरी बात क्लियर है यहां तक? यस सर। फॉर एवरीबॉडी, एम आई क्लियर विथ यू ऑल? यस सर। So these are the various pointers on which I discussed with you. आप कोई भी खड़ा कर सकते हैं. It is an example, right? Based on your institution, you can create some pointers and ask your teacher
to fill these pointers themselves only. और ये पॉइंटर्स वो आपको नहीं देना वो शीट उसको वापस, केवल ये बताना है उसको बेस्ट कहां मिला, किन चीजों में मिला. टीचर बहुत इंटेलिजेंट होता है सर, उसको पता चल जाएगा ना कि ये मेरा वीकनेस है, वो खुद ठीक कर लेगा. बस समस्या ये होता है मुझको मालूम ही नहीं होता मेरा प्रॉब्लम क्या है. Yes, sir. So actually, principal has to identify some of the problems in teachers, and if they say that some of the things, so that they can rectify it and they can correct it, so that they can give some their yes, sir, what you can say, the efforts for the improvement of the institution and also. No doubt. Very well said, sir. Very well said. As Very well students will not be telling about this. Only close friends will be sometimes informing about some weaknesses of the colleagues. But better principal has to inform such of the things, and he has to improve their weakness, and they have to convert their weakness into strengths. Very smartly and intelligently, the principal need to give me the understanding of my weaknesses without saying that this is your weakness. Yes, sir. Principal need to facilitate the atmosphere so that the teacher can understand this is my weakness. Yeah. एक बार मालूम हो जाए ना मेरा वीकनेस क्या है, मैं सब ठीक कर लूंगा सर. Yes, sir. मैंने फिजिक्स पढ़ा दिया, ये क्या चीज है, मुझे पता चल गया कि आपको मेरे जूते के पॉलिश नहीं होने से दिक्कत होती है. मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूं आपको, तो जूते में पॉलिश क्यों नहीं कर सकता. क्लियर है सर? Yes, sir. Sir, these are the 5 pointers for you. One is value addition model. प्रिंसिपल को ये काम करने हैं, एचओडीज को. आपके इंस्टीट्यूशन में क्या वैल्यू ऐड हो रहा है. सर, एक प्रिंसिपल एक टेन्योर पूरा करके इंस्टीट्यूट से बाहर जाता है, दूसरा प्रिंसिपल आता है, तो पहले प्रिंसिपल ने 2 साल 3 साल में किया क्या, कुछ तो किया होगा ना सर ना. Yes, sir. तो पहली चीज है वो वैल्यू ऐड करता है पूरे एकेडमिक्स में. दूसरी चीज है क्लासरूम की डिलीवरी करेक्ट करता है, इफेक्टिवनेस बढ़ाता है, इफिशिएंसी बढ़ाता है. तीसरी चीज है अपना ऑब्जर्वेशन वो ऐसे करता है, न किसी को ऑफेंड करता है, न किसी के साथ बायस होता है, सबको अपॉर्चुनिटी देता है ग्रो करने की. क्लास के आर्टिफैक्ट्स को देखता है, टीचर्स की पोर्टफोलियोज को करेक्ट करता है, एंड स्टूडेंट्स की इवोल्यूशन, ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट फोकस होता है उसका. राइट सर? Yes, sir. देखिए, आर्टिफैक्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. लाइक लेसन प्लान है, टीचर के असाइनमेंट्स हैं. राघवेंद्र सर, Yes, sir. आप अपने क्लास में जो असाइनमेंट देते हैं, कभी आपके प्रिंसिपल एचओडी ने आपके जीवन में कभी इस पर सवाल जवाब किया आपसे, No, sir. ये टॉपिक क्यों दिया, No, 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 sir. इस तरह का असाइनमेंट क्यों दिया, इस तरह का क्यों नहीं दिया? Yeah. कभी किसी ने आपको गाइड किया कि ये 10 तरह के असाइनमेंट्स होते हैं, तूने ये 200 तरह का क्यों नहीं दिया, हर बार एक ही तरह का क्यों देते हो? Yes, sir. कभी आपके प्रिंसिपल ने ये पूछा इस असाइनमेंट से तू जानना क्या चाहता था भाई, व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड गिविंग दिस असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स, व्हाई दिस असाइनमेंट हैज बीन गिवन इन दिस टाइम. भाई 6 महीने का पूरा सेमेस्टर है, आपने असाइनमेंट पहले महीने में क्यों दिया, छठे महीने में क्यों दिया, क्या कारण था इसके पीछे? Why you had selected this time to give this assignment? There must be some reason behind it, ना? Yeah. And जो रीजन होने चाहिए वो बहुत वैलिड एजुकेशनल रीजन होने चाहिए.
यहाँ तक क्लियर है सर? Yes, sir. राघवेंद्र सर, आपके मन में कोई प्रश्न है? No, sir. So, some ideas about this one. There is a management of faculties and non-teaching staff of the institution. So, in the sense that wherever they have some weakness and all, if we are unable to express the thing directly, we can conduct some webinars about the same. There's a few examples you have given. One is personality and how to introduce these humors in the classes. For those things, we can add certain webinars for the faculties, so that if you are unable to express directly the weakness of the staffs. And second thing is that we have to involve in the there is a teaching indirectly. That is means what teaching faculties are actually teaching and what they are giving, and assignments and all. What exactly the requirement, how they can improve their teaching methods. In those are things we can help them, so that they can improve their teaching and all. And also one more thing in the session, sir, I just got an idea that this by giving some self-evaluation methods, and no doubt there is a best method, sir, so that every staff will be able to identify their weakness and also the strengths by taking some of the 10 to 15 or 20 factors depending upon the area where we are actually teaching. So, and every month, if we just go on rectifying the problems, and we can correct it, and next month we can go for next problem, and we can rectify that problem, and we can correct it, and finally from 10% to 80% we can correct all the problems, and we can teach with more effectiveness. This is the summary of this session according to me, sir. Thank you, sir. Okay, sir. I just want to add one thing. Yes, sir. Being a principal, हमें हर महीने में 2 एक्सरसाइज करने चाहिए सर. हम देखते हैं कि पूरे फैकल्टी के अंदर में ये 2 फैकल्टी हैं जिनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, 2 फैकल्टी हैं जिनका स्टूडेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ये 2 फैकल्टी हैं जिनका क्वेश्चनिंग या असाइनमेंट मेथड बहुत अच्छा है, राइट? तो हम हर सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को हम अपने फैकल्टी मीटिंग करेंगे, जिसमें प्रिंसिपल एंड सारे फैकल्टीज होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ होंगे, और वो जो 2 फैकल्टी है ना जिसका स्टूडेंट इंटरैक्शन बहुत अच्छा है, वो हमको बताएगा कि स्टूडेंट इंटरैक्शन अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए. आप पूरा रोस्टर पहले बनाएं, सी टू इट हर फैकल्टी को उस रोस्टर में एक बार बोलने का मौका मिले, कोई ऑफेंडेड ना फील करे. और बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग एन एचओडी, बीइंग एन इंचार्ज, मैं सबसे हम्बल स्टूडेंट रहूंगा उस क्लासरूम में उस टीचर से सीखने का. जब वो टीचर मुझे स्टूडेंट इंटरैक्शन के मेथड्स बताएगा, वो कैसे करता है, क्या करता है, बीइंग अ प्रिंसिपल मैं बहुत आराम से उसकी बातें सुनूंगा, उस पर सहमत होऊंगा, उसको मानूंगा, उसको देखूंगा. Lest all other faculties will also listen to all those things, and they will rectify their own problems. And जो 2 फैकल्टी आज मुझे पढ़ाएगा ना, उस 2 फैकल्टी को एक फील आएगा कि चलो कहीं तो हम बहुत अच्छा है. और at the end of the year you will find a very good team is created over there. Yes. And you started a method of peer learning. It is not advisable that every time an outsider could enter in your institution to teach or to train. You have your faculties, they can train themselves at times. मेरी बात क्लियर है सर? Yes, sir. आप इंप्लीमेंट करके देखना, you will find a different organization over there. Yes, 2 sir. महीने में ऑर्गेनाइजेशन बदल जाएगा. थैंक यू सर, थैंक यू Okay, फॉर sir. योर हेल्प. Thank you, sir. बिजली मैम.
Karthik, SM Bijli ma'am. Karthik, yes, Karthik. Yes, sir. Thank you. So in this session, you are helping me. I'll try my level. Supported by Karthik ji. Ma'am, Yes, sir. this session is monitoring student achievement and development. Right, ma'am? Okay, sir. You are from which state, ma'am? Karnataka, Ma'am, you are from which state? Mysuru, sir. You Karnataka, remain Mysuru, sir. unmuted. Can you able to hear Yeah, me? I am hearing your voice. You remain unmuted, ma'am, so that I can talk with you continuously. Ma'am, some student has taken admission in your institution, and it is my responsibility to develop this student every day. Right? Yes, sir. And you need to monitor, you need to understand as a principal the developmental graph of every student. What is happening there? I'm giving you an example. Every student is going with 5 different topics in a semester, or 6 different topics in a semester, right? And this semester, out of these 5-6 subjects, there are theory and they practice. Theory and practical aspect. And there are other behavioral aspects also in the class. As a principal, Yes, sir. do you know that out of these 100,000 students in your Hello? institution, what is the growth? Hello, sir. What is the achievements of all I'm these not able students? to hear your voice, sir. Hello? My question is, Hello? are you able to hear my voice? Am I audible? Yes, sir. बिजली मैन मेरी Not आवाज able मिल to रही है hear your आपको? voice, sir. You better reconnect yourself. Better disconnect and reconnect yourself. Let me talk with someone else. Okay, sir. I'll try. Is there anyone else? Karthik? C. Nenu? Karthik, C. Nenu? Are you there? Rasmi ma'am? Hello, sir. Yes. Hello. Yes, sir. Karthik. Yes, sir. You are from which place, Karthik? Sir, I am from Kerala. Right. My question is, how many students are there in your institute? Almost 80 something. 80. Total student present in the institute. Yes, sir. 80 plus. Say out of these 80, 100 or 1,000 students in any institution, do you have an understanding that what is happening to these students in this week? Yes, sir. How do you know? We'll keep on monitoring what are the lesson plans they're having. No, no, how you are monitoring the student development? Each day after class, there will be a mock test for students. So their marks and their developments are monitored continuously. Sir, these tests gives the level of understanding. Yes, sir. Right? Yes. These tests gives me an understanding of level of understanding of the subject. If the topic is having 10 different concepts, I can only test 2. Okay. And if a student knows these two aspects,
he will get 100% marks. Okay. And if a student only knows these two aspects, he do not have the understanding of rest of 8 concepts. Okay. Even then he will get 100% marks. Okay. And the student who is having the understanding of rest of 8 concepts may get 0 marks. Okay. So the marking is not going to help you out to understand the ability and capability and development of the student. Do you agree with that? Yes, sir. Definitely. Please write in the chat box, do you agree with this concept that periodical test is not the only method, should not be the only method to evaluate the student progress? Karthik sir, think. If in my institution 800 students are there, or 8,000 students are there, or 20,000 students are there, as a principal, how do you ensure that every student is progressing? Karthik ji. Yes, sir. How will you ensure? Let me move with you with the presentation. Right? Okay. See, the student, listen very carefully, sir. Okay, sir. Students are in the age bracket of 18 to 22 years. This is an age bracket where they are very energetic. They can create their career or they can destroy their career. Agreed? Yes, sir. So we need to have a continuous monitoring of these students in this age bracket. And in the educational institutions, this subject, the topic you have taught now will not be repeated in entire of the academic program. जो सब्जेक्ट जो टॉपिक मैंने आज पढ़ा दिया अब पूरे साल में वो नहीं पढ़ाया जाएगा दोबारा. Agreed? Yes, sir. So every day is very important. Every lecture is very important. Okay. True? Yes. So we need to develop a pattern through which student progress can be taken care of. Yes, sir. Karthik sir, think on that. I am a student, right? Okay. There are 5 different teachers coming and teaching to me. I may be very good in one, maybe average in rest of the 3, and very weak in the 5th subject. Right? Yes or no? Hello. Yes, sir. Sir, I was not able to hear you. Some issue. Yes, sir. Tell me. I'm repeating. Okay. I'm a student, and 5 different teachers are teaching to me. Okay. In one subject, I am excellent. In 3, Okay. I am average. And in the 5th subject, I am very weak. That means Okay. I am not doing good in the 5th subject. Okay. Whose fault is? ये किसकी गलती है? किसको करेक्ट होना है? स्टूडेंट को, टीचर को? Teacher. Teacher needs to continuously. Who is supposed to rectify? Student or the teacher? Faculty. Why? Faculty need to give more stress on that subject for that particular student. In the class,
of 50 students, 40 students are very good in that subject, 4 students are average, and 6 students are weak. Okay. Mr. Ram is also as a weak student in that subject, and rest of the 4 subject he is above average. Okay. So who is supposed to rectify himself? Teacher needs to give more focus, and the student also has to work to improve in that subject. So how do you find the problem? As a principal, what will be your steps? How will you understand where is the problem? Through his mark sheets, homework assignments, and other. Sir, if I am going with all those things, that is a traditional method, I am not going to help anyone. I repeat, this Okay. is looking at the mark sheet, looking at the homework, looking at the assignments. I am not going to help neither the student, nor the teacher, nor the institute. And it is also not justified as a principal for me. मैं रिपीट करता हूं, मैं अपनी बातों को रिपीट करता हूं, राइट? Rashmi ma'am, are you there? Rashmi? Yes, sir. Rashmi ma'am, you are from which place? I'm from Kerala. Ma'am, my question is clear to you? No, so there is some sort of issue with the range. Can you pardon me? Pardon me, I'm please? repeating it again. Yes, sir. A student in a classroom Okay. is going with 5 different subjects. Okay. 5 different teachers are giving evaluation to the student. Okay. In 1 subject, he is excellent. Okay. In 3 subjects, he is above average. Okay. In the 5th subject, he is very, very weak. Okay. The faculty is having n number of complaints with the student. Okay. And the 5th subject, Oh. in the class of 50 students, 40 students are satisfied. Okay. 10 students are there who are not getting marks and all those things. A number of problems are there. Okay. So being a principal, what will you do? First, we will have to find out the problem. That we will have to talk to the student, and we will have to find out the problems. Based on the report cards, we'll be getting a better idea about the marks and all. So based on that, we'll have to take the feedback, and we'll have to talk to the teacher as well as student, and we have to find out the issue and have to rectify it. Okay. How many students are there in your institute? 250. So looking at all those 250 students' developmental growth every day, is it possible for the principal? Thing is that there will be the group instructor who coordinates everything. The coordinator is needed, right? Group instructor coordinates it. Please remain unmuted so that I can talk with you. Okay, sir. I'm giving you my concept of doing these things. The world has changed, man. Now it is an era of technology. Okay. Now the average is not accepted everywhere. Yes, sir. You need to excellent in your life, right? Yes, sir. So what I am doing, I am asking every student to have an Excel sheet for the students. So there are names of all 50 students are written. On 10 parameters are given. And after the class, a teacher need to give marks on all these parameters to all the students.
right? Yes, For sir. example, teacher has asked questions from 6 of the students. He has not asked questions from others. So out of these 6 students, he received an answer. Either Okay. exactly correct, partially correct, or wrong. And rest of the other 46 students, 44 students has not participated, has not got the opportunity to participate. Right? Okay. In the class, the teacher has got an average assessment that these 3 students are disturbing the class, or these 4 students entered late in the class. So all the negative things or the best things he can observe, right? Yes. So at the end of the class, he is able to mark on the Excel sheet out of 1 to 10. Either he is having the understanding these 5 students has done very good, or these 5 students have done very bad, and rest all are average. So the for average, he can give 4-5 marks, 6 marks, 7 marks, Yes. or for the best he can give 10, or for the worst he can give 1. He can mark these 6 students. I had asked from these 6 students, and the next class when he enters, before entering to the class, he will just give a view on that sheet that what he did in the last class. And the next class, again after his teaching, he will come out and give marks to all these 50 students in those parameters. Am I clear with you, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. So entire week he has given marks to every student after his class. Same thing has been done by teacher B in different Excel sheet with the same parameters. Same thing has been done for entire week by a teacher C on the same parameter for entire student of that class. Right? Okay. These 5 teachers will present this sheet to the non-teaching employee or MIS people to enter all those things on the Excel sheet. If your teacher is having a computer, they can do it on Excel sheet. If they do not have the facility of a computer with the teacher, they will do it on a paper and pencil, and the MIS will enter all those things in the MIS room. Right? You got my point? Yes, sir. Yes, sir. So after the month, 4-week MIS is there for every student by every teacher. And a graph is created by the MIS how the student has done in entire week after week. If he is being marked 8 by 4 teachers on the class attendance and 2 by the 5th teacher, that means by the 5th teacher it is observed that a student is not attending the class, and for all the 4 teachers student is punctual. What does it mean? ये क्या मतलब है मैम इसका? Okay. As a principal, how will you interpret it? Yes, like this may be a reason why that particular student is not getting proper marks. Student is
attending the 4 teachers class Yes, the every particular. time, Yes, yes. and the 5th teacher is not attending. No. So where is the problem? So he has some class problem with the understanding. He doesn't want to attend this particular teacher's class. There will be some issues with the teaching method followed by that particular teacher. So being a teacher, what I am supposed to do? I am supposed to talk with the student. I am supposed to see the method used by the teacher in the class. Yes, sir. What I am supposed to do? We need the particular teacher need to improve. Being a principal, I got the understanding. Where is the problem? Yes. Let's give another example. In the month of June, the student average marks given by all these 5 teachers are 8. Okay. And in month of August, it is 3. Month of September, it is again 5. If from January to June, it is 8. In month of August, it is 4. Where is the problem? There's a problem with the teaching. Same teacher is teaching. The teachers in the semester is one and same. Out of 6th month of this teaching, first 3 months, the student is getting 8 out of 10. Okay. In the 4th month, student is getting 3. Okay, we will have to arrange a counseling section with this particular student and need to find out the problem and take measures to rectify it. Maybe a problem with the student, maybe a problem at the home of the student, or maybe some circumstantial problem with the student. So I need to talk not only with the student, but with the parents. Yes, sir. Yes. Do you have the facility and the provision to understand where a student is moving in the academics? Yes, sir. Yes. For month after month, week after week, do you have any process? Are you getting my point? No, there is a sound disturbance. So are you getting my point? That you need to have a facility, a method to analyze the student week after week. Yes, sir. Yes, sir. Because if I understood after 6 months in the examination, student was weak in subject A. Okay. What can I do? He has passed the semester. Can we do any remedy over there? So we actually we need to monitor him, that particular student, and if we need to monitor, if we understand between the semester that the student is weak on understanding on these subjects, I can arrange additional classes. Yes, yes. I can do something else. But after this semester, if I found that the student was weak in this subject, what can I do? Student has crossed the semester. Yes. Now new semester is there. And that student is at the end of entire program will not get a good job. Yes, sir. And being a principal, I know that he was very weak in mechanics. That's why he is not getting job. What can I do? What we can do is from the beginning itself, we should have continuous monitoring, and we should try to avoid such situations. So do you have any provision in your institution to monitor periodically with the students' progress? Yes, sir. Yes, sir, we have. For the benefit of everybody, please write Yes, in the sir. chat box. अगर आपके पास कोई ऐसा provision है student को monitor करने का week after week. Yes or no? Yes, we have. Which is the provision? आप कैसे करती हैं मैम? For rest of everybody, please write yes or no. आप कैसे करती हैं मैडम?
We usually conduct tests. Every month we conduct tests. And also we have forms in which we usually write down about the students' efficiency and all those things. When a teacher is writing in the form the student's efficiency at the end of month, is it fact or is it perception? Not in the end of month. Daily we used to check their works and we used to note down the things. The progress card, in progress card, as well as we have some forms. We usually note down in that. So you have the process to monitor the student growth. Yes, sir. Yes, sir. This recording of this student growth is being communicated to the student and the guardian? Student, the guardian, as well as the group instructors. Is it communicated? How you are communicating to the guardian? We have a parent WhatsApp group. So we used to send the marks and all to the parents through that. And we have this regular PTA meetings. Mm-hmm. And as well as the parents used to visit the institutions, and it's like that. Okay. So this is a method you are utilizing, right? Yes. I'm giving you a method through which that can be done. Yes, thanks. So if you are having method, this is good to do. I request everybody. My method is I create an Excel sheet, give 4, 5, 10 parameters over there, and give this sheet to all the teachers so that after the classroom, they enter marks between 1 to 10 to all the students based on their own observation. And at the end of the week, every teacher's student marking sheet will be given to the MIS people so that that can be entered in the Excel sheet so that a graph can be created for every student growth. Am I clear on that? मेरी बातें क्लियर हैं? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मैम आप थोड़ा मदद करेंगी? हम लोग इस पूरे सेशन में क्या बात कर पाए? Will you repeat on that? Sir, we were talking about the monitoring of students' achievements and developments, and the need of continuous evaluation, and the need to give the Excel sheets to student and write down the. Right. Very well said. Very well said. See, being a principal or being an HOD, I need to understand what is happening with my students, whether they are progressing or they are deteriorating. Subject-wise, attribute-wise. Say a student is attentive in the month of February, but in the month of March, I found a student become non-attentive. So I need to focus and rectify these problems in the month of March only. I need to take certain steps to understand why this is happening, why students are not attentive. Either with the student, with the guardian, with the monitors, with the class teachers, with the mentors, a number of people are there. But I need to understand what is happening with my students, because do not forget, it is the sole responsibility of the principal and the HOD
that their student could get developed in those academic time. So if a student is not developing or deteriorating in any of the aspect, I need to rectify and correct it. So before correcting, I need to understand what is the problem and where is the problem. So this student monitoring weekly basis, daily basis will help you out as a principal to understand the problem and rectify it at times only. Am I clear with you all? Is there any question from anyone? किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप अपने को अनम्यूट करें और सवाल पूछें. Publishing assignment marks in progress card. The progress card is a final statement. And once I published a progress card, the growth of student and my responsibilities ends here. The student has taken admission in my institute to get a excellent progress card. And if a student is getting 30% marks, that means as a principal, I think. Mr. Biswas, you want to add something? Yes, sir. I just want to share you one incident regarding this student parents conferences. In our college, we have. I used to arrange it almost every 6 months. But the problem is, since in case of college, there is a natural tendency. Probably, I guess in West Bengal, I cannot say about other states. Most of the parents are not much interested in attending the conferences. The logic they used to place, हमारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं तो अभी हम लोग को क्यों जाने की जरूरत है? They are in the college. Agreed. सर ये इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है मोस्टली इन केस ऑफ आईटीआईज कि आपको तो पूरा पता है कि आईटीआई में 10th का भी एडमिशन लेते हैं, ग्रेजुएशन जो करते हैं वो लोग भी एडमिशन लेते हैं. तो ये जो रेंज बन जाते हैं कि एक 10th के बच्चे के साथ हमें एक ग्रेजुएशन किया हुआ एक लड़का जो आफ्टर ग्रेजुएशन 2 या 3 साल कहीं पे नौकरी के लिए कुछ ढूंढ रहे हो, उसको नहीं मिला होगा तो बाद में आके आईटीआई में एडमिशन ले रहा है. ये जो मैचिंग रहता है कि मेरा करियर में ऐसा भी हो चुका कि मेरा स्टूडेंट मुझसे 3 साल बड़ा है. When I started my career as a teacher in ITI, most of my students are more 3 to 4 years senior than me. तो हमारे टीचर्स के लिए भी ये कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होता है मोस्टली इनके सब पेरेंट्स. अभी आपके साथ मैं बात नहीं कर पा रहा था कि हम लोग का एग्जाम का एक प्रोसेसिंग चल रहा है. यहाँ पे बहुत सारे आईटीएस के भी लोग अटेंड कर रहे हैं. सो आई एम अनएबल टू कांटेक्ट विद यू सिंस मॉर्निंग. तो अभी रिसेंटली 2 रिफ्लेक्शंस मेरे पास आए. टीचर ने कंप्लेन किया कि उनके गार्जियंस लोग मतलब मिसबिहेव कर रहे टीचर के साथ. इमीडिएटली हुआ. तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस इंसिडेंट विद यू. इज वेरी आई फाउंड दिस वेरी मींस कनेक्टेड विद दिस टॉपिक टुडे. Thank you for sharing this. I request you to remain unmuted for whole of this session. Sir, probably today it's not possible for me continuously because I am having some duties regarding supplementary exams with DITE. Okay. So I will listen to you, but whenever please try to understand. Get your point. Sorry, sir, because no issue. Get yourself muted. Don't worry in that. Okay, sir. And sir, I will take your number later on. Kindly, I can contact you. Definitely. No issue. Please don't mind, sir. Okay, I'm just means under pressure with this examination. Otherwise, everybody this problem. क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे बहुत सारे हमारे वेस्ट बंगाल की भी आईटीआई के टीचर्स मैंने देखा ग्रुप में वो लोग होंगे तो उन लोगों को भी ये सिचुएशन शायद पता होगा. ठीक है. So I think they can share it. Sir, we had please remain muted. Yeah. I do understand these are the problems. That's why this topic has been selected to discuss. Shivaji.
PB Binu. Anyone is there? Yes, sir. Yes, sir. Binu, sir. Yes, sir. Sir, you are from which place, sir? From Kerala, sir. Kerala. Right, sir. Sir, this is a problem. What sir was saying that this is a problem with the West Bengal, but I feel this is an international problem. Parents are not ready to get involved in day-to-day activities. They become disinterested. They want to blame you that you had not taken care of their children properly. The children did not get proper education, or children did not get a good job, but they are not ready to help you out. Sir, do you also feel these problems? No, sir. Actually, not at sir. Okay, let's start with an example. I had called you for a seminar. Right, sir? Okay. And seminar is for the development of Sanskrit language. You had an invitation that I had invited to enter the seminar, how to develop Sanskrit language. Do you think that you will take off from your institute and participate in the seminar? Yes or no? No, sir. Actually, I am not aware now about the Sanskrit language, so I am not You able will to not participate in that seminar. because the subject is not interesting for you. Yes, sir. It is not useful for you. Right? Yes, sir. Yes. Right, sir. You are teaching what subject, sir? Computer, sir. And if a seminar is use of languages of computer in ITI conducted by IIT Chennai, Okay. you got an invitation. Will you participate in the seminar? Yeah, sir. Definitely, because I know about that. Because you find it interesting. Yeah. You expect that you will get some benefit out of it. Yes, sir. So if I am requesting a parent to involve, the parent should understand that it is useful and interesting. Yes. If it is for the complaint, and if it is an responsibility transfer only, they will not encourage to participate. If I am saying that your children is not attending class regularly, please take care. What I am doing, I am trying to pass my problem at the head of that guardian. Are you getting my point? Yes, sir. Let's move with the slide and remain unmuted. Right? The parents should involved in the educational activity. And the teacher. So your voice coming. Please mute yourself. Everybody, please mute yourself. The echo will not there. Requesting everybody, please mute yourself except Mr. Binu. Rest, everybody, please mute yourself. Sir, I was talking on that. If I am inviting a parents meeting to pass my problem
at the head of the guardians that your children are not attentive, your children does not have the discipline, your children are very weak in mathematics, your children are not doing this, or problems. Do you think that I will come down to listen your problems? No, may sir. not be, sir. No, sir. No one will come down. So what is the solution? I'm giving you a solution. Parents should be involved in academics, in the school, in the institution, with various different objectives. First, they should think that they are part and parcel of the environment. I'm giving you an example. In every semester, I'm requesting all the parents to come on any holiday. Let it be on Sunday, 15th August. I'm requesting all the parents of that particular class. In a class, 50 students are there, so 50 parents are there, or 100 parents are there. I'm requesting everybody, please come, join in the celebration of this class. I'm not discussing anything about any particular student. I'm inviting them for a party with tea, biscuits, a cake cutting. That's all. Out of these 100 parents, in the first meeting, 20 parents have joined. We celebrated a cake cutting, having tea, exchange of words, get together, closed everything within 30 minutes. Release all the parents in 30 minutes time. Giving an appeal to other parents, we had not been asked to discuss about deficiency of my student. We invite all the parents for various school celebrations. For example, it is zero investment. It is zero investment if I fix a system and enter the date of birth of parents or the children's or the marriage anniversary of the parents or SMS or wish of happy birthday will be automatically sent to everybody. And the institution is not supposed to spend a single paisa. If you want the parents should help you out, you need to develop a confidence with the parents that they are a part of the school activity. So sending wishes to the parent in various days is one. Inviting them once in a semester to celebrate a day with all the parents together, with all the children together, sending students developmental report on the various parameters collected by the principal, as we discussed in the last session, a graphical representation that your student has been admitted in the month of September, and for last 3 months, his development is like that in these 10 parameters: discipline wise, understanding the class, response in the class. Only graphical representation, no question, nothing like that.
if I need something, some help from the parents, I need to develop a rapport. Do you ever use any activity to develop a rapport with the parents, Bhanu sir? Bhanuji, are you there? Binu sir, are you there? Yeah, sir. Yeah, I'm here. Do you follow any activity to build a rapport with the parents? Yes, sir. Continuously contact parents. We always contact parents to complain. No, not complaints, sir. Then? If there are any, if the students not class attended, I will When do you contact call parents? Is there any reason? Sir, when do you call parents? Sorry, How sir? do you monitor the parent-teacher meeting? Yeah, monitoring activity. Are you able to hear No, my sir. voice? I'm not. Yeah, sir. So, what is the Monitoring method? means, I will ask the parents what the activity students come back to माइक बहुत सारा माइक ऑन हो गया. भानु विश्वास सर, विश्वास जी, बंगाल. Yes, sir. You wanted to add something. Sir, regarding parents, means students and parents teachers meetings, I used to do in a way. हम लोग हर 6 months में सेमेस्टर फीस लेते हैं. तो हम क्या करते हैं कि वो जब सेमेस्टर फी देने का टाइम रहता है, उस टाइम पे हम लोग पेरेंट्स को क्या देते हैं कि आप लोग कॉलेज में आ जाइए. ठीक है. तो रीजन हम लोग बता देते हैं कि यू आर पेइंग द सेमेस्टर फीस, सो यू शुड नो दैट वेदर द फीस दैट यू आर पेइंग इज जस्टिफाइड और नॉट. क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा दे रहे, तो उन लोग को एक इंटरेस्ट मिल जाता है. ठीक है. लेकिन सर इसमें भी बहुत लोग नहीं आते होंगे. हाँ सर, बहुत लोग नहीं आते होंगे. मतलब बात वो हो जाता है कि क्लास 10 और 12 के जितने बच्चे रहते हैं, उन लोगों का पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रह जाता है. But the guardians, the students who are graduate or somebody did master postgraduate, this category of students which are getting admitted in ITA, उन लोगों का parents involvement बहुत कम रहता ही नहीं है. मैंने इसीलिए सवाल उठाया. If you are inviting a parent regularly for various different aspects, for example, 15 अगस्त को आपके यहाँ फ्लैग होस्टिंग है. क्या आपने पेरेंट्स को बुलाया? एक SMS, एक व्हाट्सएप पेरेंट्स को इनविटेशन का दिया गया? नहीं सर. सर आपके यहाँ इंस्टीट्यूशन का एनुअल डे होता है. हाँ, उसमें बुलाते हैं हम. उसमें जो बुलाते हैं वो कैसे बुलाते हैं सर? उसमें बुलाते हैं, आपका वो एनवेलप में इनविटेशन स्टूडेंट्स के थ्रू भेजते हैं और कॉन्टेक्ट में हम लोग कांटेक्ट कर लेते हैं गार्जियंस के साथ. एक इनविटेशन लेटर भेजते हैं. जी सर. गार्जियंस को टेलीफोन भी करते हैं. हाँ, दोनों तरफ से कर लेते हैं. कैसा रिस्पॉन्स 50 to 60% रहते हैं, बिकॉज it depends on locality also and the type of family background कि candidates किस तरह से आ रहा है. सर उसमें जब आप इनवाइट करते हैं तो क्या आप ये लिखते हैं कि अगर फादर या मदर अवेलेबल नहीं हो, बिजी हो, तो यू कैन सेंड गार्जियन को या सर लिखते हैं. जी सर लिखते हैं. और अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करता है तो क्या करते हैं? तो कांटेक्ट, उसके बाद हम लोग कांटेक्ट करते हैं कि आप क्यों नहीं आ पाए. तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस आ जाता है कि टाइम नहीं मिला, या तो फिर
किसी काम में हम लोग बिजी थे, बाद में देख लेंगे, तो कोई फोन उठाता नहीं है, किसी के पास फोन रहता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्राइबल एडमिशन ज्यादा होते हैं सर ये और चैलेंजेस रूरल हमेशा रहेगा। रूरल बेल्ट से ज्यादा है, तो ज्यादातर लोगों का वहाँ पे मैक्सिमम दे आर फार्मर्स, सो सर मोस्ट ये ऑफ देम। चैलेंज हमेशा रहेगा। जी You सर। cannot ensure 100% participation. हाँ, If it is more than 60%, one should be happy that guardians are participating. अब देखो कुछ चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट का बेनिफिट क्या है? द फर्स्ट बेनिफिट इज आप डेवलपमेंटल ग्राफ स्टूडेंट का अगर आप पेरेंट्स से डिस्कस करते रहेंगे तो आपको ये पता होगा कि उसके घर पर क्या हो रहा है। जी सर। And then you will have the opportunity to discuss with the student with little more information. तो आप अपनी कहानी, अपने सिस्टम को और अच्छे से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गार्जियन बहुत बिजी है, अवेलेबल नहीं है, उसके घर में पैसे नहीं है, मोबाइल नहीं है, दिक्कत में है, और हम उसको बोलते हैं तुम इस वेबिनार में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो उसके पास तो इंटरनेट रिचार्ज करने का पैसा ही नहीं। हाँ जी सर। तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करेगा? हाँ। और अगर नहीं कर पा रहा तो उस कंस्ट्रेंट को हमको किसी दूसरे तरीके से दूर करना पड़ेगा, हमको फायर नहीं करना पड़ेगा। अब एक दूसरी चीज सामने, if a guardian has not attended or if he has attended, उसको क्या इंपॉर्टेंस दिया गया? आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। आपके यहाँ 15 अगस्त की फ्लैग होस्टिंग है। इनवेरिएबली आपके जो प्रिंसिपल है, आपका जो मैनेजमेंट कमिटी है, वो फ्लैग होस्टिंग करता है। ठीक है सर। हाँ। जो गार्जियंस को आपने बुलाया, क्या उसमें से 2 गार्जियन उस फ्लैग होस्टिंग के लिए चीफ गेस्ट के साथ डांस पर नहीं चढ़ सकता? बिल्कुल चल सकता सर। और अगर वो चढ़ता है तो गार्जियन को हम इंकरेज कर रहे हैं कि तुम इस फेस्टिवल में, इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट तो करो। हाँ सर, वो मेरा भाषण सुनने नहीं आया। हाँ, उसको मौका दिया भाषण देने का। 15 अगस्त की उस झंडा फहराने के बाद मैंने भाषण दे दिया और सभी स्टूडेंट को और उनके गार्जियंस को बुलाया भाषण सुनने के लिए। Is it fair? No sir. Am I not calling audience for this? I should call participants, not the audience. Yes sir. So if the guardian feels that they become audience, they will not come. Sound clear नहीं है सर? For the everybody, आप अपने को म्यूट करें सर। If I am inviting a guardian as a participant, then the chances of participation will go up. Let's have a family night. In once in a year, you call all the guardians with the family. And that too, if you are not having the finances with you, that too with the participatory mode. Call for a tea, snacks and tea. A 2-hour program where your students, your teachers, everybody will entertain the families. No discussion on the academics, no report, nothing like that. Let's have a repo over there. Ask to volunteer a guardian that we are going to have a celebration of Durga Puja
or celebration of Saraswati Puja in my institution, will you like to be a participate? क्या आप पूजा में शामिल होकर पूजा करना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि 2 गार्जियन पूजा करें इस बार. Let invite them to participate. If the guardians become participant, or for example, आप एक मेल भेजें गार्जियंस को और लिखें कि we want to organize a soft skill development workshop. If you feel that you are able to deliver a good session on interview techniques or the personality development or the soft skill or the communication, please volunteer and come and talk with my students. 2-4 गार्जियन ऐसे होंगे जो बात करने के लायक होंगे, बात कर सकते होंगे. We need to involve guardians in various activities. Am I clear with you, sir? Yes, sir. Will you ever ask the guardians कि आपके आसपास आपके परिचितों में जो इंस्टीट्यूशन है, जो फैक्ट्रीज है, जो इंडस्ट्री है, क्या आप मेरे इंस्टीट्यूट को वहां कनेक्ट करा पाएंगे? आप लिखेंगे 100 में से 99.9 के पास कोई नहीं होगा, एक के पास होगा. But you are creating rapport. You need to create rapport in various aspects. Yes, sir. Yes, sir. Not only 1 and 2 and 3. And few things is very important because we need to understand the time of the guardian. If a guardian is giving you time of half an hour, we need to take care of this time. So certain things has to be done before the conference. So the proper information material and information should be there during conference. You need to welcome them. साउंड क्लियर नहीं है जी. बाकी लोग म्यूट कर ले सर. अगर आप ऐसे चीजों को करेंगे तो it will take a year to encourage the guardians to participate in your activities. Because guardians are afraid that if a education institution is calling, it must be for the complaining. ये जनरल परसेप्शन है, कंप्लेन के लिए बुला रहा होगा. सर आपका मेल आईडी और नंबर सर. मैं मेरे हर स्लाइड के बाद है. हाँ सर, थोड़ा आप स्लाइड थोड़ा दिखा सकते हैं, मैं नोट कर रहा था, प्लीज. मैं लिख देता हूँ. किसी के मन में और कोई प्रश्न है सर? किसी के मन में कोई प्रश्न है? सर प्लीज वेट सर. सर प्लीज वेट सर. मैम सर आपका नंबर सर, 1 मिनट. Anybody is having any? Don't worry, I will send it on the WhatsApp group. Don't worry on that. किसी के पास और कोई प्रश्न है? No, sir. See, tomorrow we will be going with 2 different sessions, or rather 3 different sessions. Being a principal, being in charge, we need to manage finances. Right, sir? Yes, sir. So पूरे फाइनेंस को समझना बहुत जरूरी है. Various financial tools available in the market. Various financial do and don't. अगर मुझे फाइनेंस की समझ नहीं होगी
I cannot manage and maintain my institutions on सर आवाज financial गूंज front. रही है सर, आप आवाज लोग म्यूट कर ले सर, सभी लोग म्यूट कर ले सर. So tomorrow we will emphasize the entire session on the financial aspects, right? So if anybody is having any question till now, please unmute and ask. Sir, what about the job placement? Can you give us? We will discuss in a semester. We will discuss Later, in a sir. session on the placement aspect also. Okay, sir. Thank you so much. So let's discuss on the aspects of feedback forms. The feedback form is being. सर Yes, sir. Sir. आज का जो सर आपने जो भी टॉपिक डिस्कस करेगा पेरेंट्स टीचिंग एसोसिएशन पीटीए, ये सब सारी चीजें बहुत अच्छी हैं अगर हम आइडियल कंडीशन में काम करते हैं. लेकिन हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल लास्ट, मैं कह सकता हूँ जो बिल्कुल रिजेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो पेरेंट्स या तो पढ़ा नहीं पाते, इकोनॉमिकली वीक, मतलब जो रिजेक्टेड लॉट आता है जनरली इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, उनके साथ उनके पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो मतलब दे डोंट शो एनी पॉजिटिव टुवर्ड्स देयर वर्ड्स. ये एक बहुत इशू है सर. सर बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है. सर उनका पूरा उम्मीद अपने बच्चों से टूट चुका है. हाँ, उन्होंने आपके पास इसलिए एडमिशन करा दिया कि पैसे नहीं लग रहे थे या कम लग रहे थे, और कुछ कराना चाहिए इसलिए करा दिया है. सेकंड थिंग, उनके यहाँ मेल पेरेंट्स तो आते ही, जनरली फीमेल आती हैं और दे सेड ही इज नॉट रिस्पांसिबल, मींस दे आर अगेन कंप्लेनिंग देयर प्रॉब्लम टू अस इंस्टीट्यूट मदर्स. एकदम सही सर. यस सर ये जो पेरेंट टीचर मीटिंग है ना, सर, ये बास्केटबॉल बना रखा है हम लोगों ने. टीचर अपना प्रॉब्लम गार्जियन के सर पर डालता है और गार्जियन अपने घर का प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम टीचर के सर पर डालता है. सर जनरली वी डोंट वेट फॉर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग फॉर 6 monthly. We generally call month wise also whenever we feel that this training is not. सर मीटिंग ओवर. This training is not. कितने बजे? Sir, we will discuss this problem tomorrow. Don't worry on that. Okay. I am requesting everybody कि आप जो फीडबैक फॉर्म्स है उसको एज ए प्रिंसिपल, एज एन इंचार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके आंसर्स को लिखें. राइट. और 12 लोग ऐसे हैं जो फीडबैक्स नहीं दे रहे हैं. I am requesting everybody to do so. So let's thank you everybody for your active participation. We will resume tomorrow at 9:45. Thank you for being with me. थैंक यू सर. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir.